Welcome to our channel, and in this video we are going to learn about a program to check whether the number is palindrome or not. Okay, so basically what is a palindrome number? Okay, what is a palindrome number? For example, if I say 1 to 1, okay, and when I try to reverse this number, I am getting the same number. I am getting the same number 1 to 1. Okay, and for example, I take one another number 1331, and when I try to reverse this number, I am again getting the same number 1331. I will give one more example, 909, and when I try to reverse this number, I am getting 909 only. So basically, what is a palindrome number? A palindrome number is a number that remains same when its digits are reversed. Okay, सो समझ आ गया आपको? पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होता है जो कि रिवर्स करने पर भी सेम नंबर आता है. समझ रहे हो? सो वी विल ट्राई to write a program for this, but before writing a program we have to note that the condition for a number to get palindrome is when original number is equal to reverse. यानी कोई नंबर अगर उसका रिवर्स करने पे भी सेम आता है तभी वो नंबर पैलिंड्रोम होगा. मींस इफ द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू रिवर्स देन ओनली द नंबर इज पैलिंड्रोम. समझ आ गया? वी विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, that is it will act as the original number. yani we will take the input from the user which will be the original number. We have to just reverse the number and check these both numbers. समझ रहे हो? हमको बस रिवर्स निकालना है उस नंबर का और ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करना है. अगर दोनों दोनों इक्वल हो गए तो वो हो जाएगा पैलिंड्रोम नंबर. समझ रहे हो? तो now we will try to write the program to calculate the palindrome number. So first of all, I will import java.util.scanner class, and then I will create a class palindrome. Okay, I will create a class palindrome. So in this class I will write public static void main string args. Okay, now after this I'll take input from the user using the scanner class. First of all, to take the input from the user, we create the object of the scanner class, scanner s equal to new scanner system dot in. Okay, now I will pass one message, system dot out dot println, and I will pass a message, enter n number. Okay, यहाँ तक तो प्रोग्राम में किसी को कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए because it's the most basic part. Okay, now I am taking a number from the user, number s equal to int number equal to s dot next int. Okay, by using the next int method we are taking the integer number from the user. Okay, so अब यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमारा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर में जो कुछ भी वैल्यू है, वॉट एवर वैल्यू वी आर गिविंग एज एन इनपुट, दैट विल बी स्टोर्ड इन नंबर. और आई डोंट वांट कि इस नंबर में कुछ छेड़छाड़ हो जाए, इस वजह से मैं क्या करूंगा, आई विल कॉपी द वैल्यू ऑफ दिस नंबर एंड स्टोर इट इन अनदर वेरिएबल दैट इज ओरिजिनल. ओके, original, int original equal to num. Just in order to keep the number safe, I am making a copy of this number and storing it in variable original. Okay, I hope this line is clear. Now what I will do, initially I will take reverse as 0. मतलब हमारे पास अभी रिवर्स कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स इक्वल टू 0. यहाँ तक प्रोग्राम समझ आ गया? मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर की वैल्यू को एक ओरिजिनल नाम के वेरिएबल में कॉपी कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, जस्ट टू कीप द नंबर सेफ. ओके, सो फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स इक्वल टू 0. हमारे पास अभी रिवर्स कुछ नहीं है, हमको ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स चेक करना है. अगर ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स आया तो पैलिंड्रोम हो जाएगा, वरना नहीं होगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली रिवर्स इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहा हूँ. नाउ it's the time to write the logic of this program. While num
greater than 0, what I will do, what I will do, I will write some code in this. Okay, so this is the logic. ये जो while loop में मैं जो कुछ भी लिखूंगा, it will be the logic of this program. Okay, I will write just simple 3 lines in this while loop. Int digit equal to num mod 10. Okay, num mod 10, and ये हो गई हमारी first line. This is our first line of logic, and second line is reverse equal to reverse multiply by 10 plus digit. Okay, so this is our second line of the logic. I will explain each line once we write the code. Okay, मुझे पहले कोड लिखने दो, फिर मैं आपको ये 3 लाइन एक्सप्लेन करूंगा. num equal to num by 10. Okay, this is basically the logic of the program. I will explain you this logic now. Okay, I'm copying this, I am creating one more notepad file and I am pasting this. Okay, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो. तो अब ये होने के बाद ये हमारा लॉजिक था, समझ रहे हो. अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल मुझे 789 नंबर का रिवर्स करना है. ओके, आई हैव टू डू द रिवर्स ऑफ 789. सो 789 का रिवर्स क्या होगा, फर्स्ट डिजिट क्या आएगा रिवर्स में, आएगा 9. सो हमने यहाँ पे वही किया है, इंट डिजिट इक्वल टू नम मॉड 10. यानी अगर मैं 789 मॉड 10 करता हूँ, 789 मॉड 10 करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, आई एम गेटिंग द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर. मैं अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर, अगर मैं 789 को 10 से अगर डिवाइड करूं तो 780 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 9. सो आई एम रिट्रीविंग द लास्ट डिजिट. दिस लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज नथिंग बट द फर्स्ट डिजिट ऑफ रिवर्स. सो आई हैव सक्सेसफुली रिट्रीव द फर्स्ट डिजिट ऑफ द रिवर्स. यहाँ तक क्लियर हो गया. सो व्हाट आई विल डू, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट. सो इनिशियली हमारी रिवर्स की वैल्यू कितनी थी, इनिशियली we have reverse equal to 0. okay, so मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, reverse multiply by 10 plus digit. so what will happen is that 0 multiply by 10 plus digit. 0 multiply by 10 कितना हो जाएगा, 0. 0 plus 9, I am getting 9. so reverse की वैल्यू कितनी हो गई, reverse would be 9. now reverse की वैल्यू 9 हो गई. now what I am doing, num equal to num divided by 10. so if I divide 789 by 10, what I am getting, I am getting 78. यहाँ तक I hope clear. so अब ये चेक करेगा 78, is 78 greater than 0? yes, then the while loop will execute once again. so वापस से ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होने वाले हैं. so एग्जीक्यूट कैसे होंगे, int digit num mod 10 यानी 78 मॉड 10 हो जाएगा. यानी ये क्या होगा, मॉड 10 यानी आई एम गेटिंग 8. आई हैव रिट्रीव्ड द वन अनदर डिजिट इन द रिवर्स. ओके, सो अब ये सेकेंड लाइन होगी, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट. ओके, सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रिवर्स, 9. ओके, नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस, रिवर्स इक्वल टू, रिवर्स की वैल्यू कितनी थी, 9 थी. 9 मल्टीप्लाई बाय 10 plus what was the digit we have retrieved, it was 8. okay, so it is 90 plus 8, what I am getting, 98. okay, so रिवर्स के हमारे पास 2 डिजिट आ गए हैं ऑलरेडी. 789 का हम अगर रिवर्स करेंगे तो 987 आएगा. वी हैव गॉट 98. सो 98 आ गया है. सो अब इफ 98, सो इज दिस 98 ग्रेटर देन, नो, इज दिस 98, नो, ये 98 नहीं, इज दिस 78 ग्रेटर देन 0. हमने क्या किया था, लास्ट डिजिट रिट्रीव किया था, नंबर क्या बचा था हमारे पास, ये num इक्वल टू num बाई 10 करना था लास्ट वाला. यानी 78 इक्वल टू 78 बाई 10. व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग 7. 7 is 7 greater than 0? yes, it is greater than 0. then again ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा. समझ रहे हो, दिस इज हाउ एट लास्ट वी विल गेट 987. समझ रहे हो, वी हैव गॉट द रिवर्स ऑफ दिस नंबर. so the first, initially the number was 789 and we have got the reverse as 987. okay, so this is how we do the reverse. Is 789
If I ask you a question, is 789 equal to 987? No, obviously not. So hence we are printing this is not a palindrome number. I hope the logic of this program is clear to you. Now I will jump back to the program now. So what I will write, if original equal to what I will write now, if original equal to reverse. Okay, yani if the original number is equal to reverse, then I will print system dot out dot println. I will print it is a palindrome. It is a palindrome number. Okay, we can also give the curly brackets, or as it is a single line statement, हम नहीं भी दे तो चलेगा. I will take this to the new line. I will do this. Okay, now it's time for the last statement, which is else statement, and I will write system dot out dot println, and in this I will write it is not a palindrome. Okay, it is not a palindrome number. Hopefully this program is clear to you now. I will now check whether I have written the program correctly or not. First of all, import java.util.scanner, class palindrome, public static void main string args, scanner is equal to new scanner, system.in, system.out.println. Then I am taking the number as input, int original equal to num, reverse equal to 0, while num greater than 0, digit equal to num mod 10, reverse equal to reverse multiply by 10 plus digit, then num equal to num by 10. If num original equal to reverse, then system.out.println, it is a palindrome number, or else it is not a palindrome number. Now I will save this program as palindrome.java. Okay, I will do the yes. Then I will click on Windows R to open the command prompt. Here I will do d:/cd space the name of my folder in which the program is saved, Java programs, and in this I will do Java C, and I will write palindrome dot java. The compilation of our program is successful, and then I will write palindrome java palindrome. Okay, enter a number. It is asking. I will do 1 to 1. It is a palindrome. Then I will once again come execute this. I will write 98879. It is not a palindrome number. Once again I will pass. I will give 1331. It will give it is a palindrome number. So hence we have written a program to find whether a number is palindrome or not. Hopefully I have made it simpler, easier, and easy to learn for you. Thank you so much.